Hello everyone. Welcome back to my channel. So today we are going to study about enzymes, the catalysts of life. Okay, enzymes is a very important topic, and we are today going to study about enzymes, which catalyzes every process happening in your body or otherwise as well. Okay, so what are enzymes? So just to give you a brief introduction about enzymes, they are biological catalysts. Okay, that speeds up the chemical reaction. Biological catalysts होते हैं, they are enzymes are basically for speeding up the rate of the chemical reaction. कोई भी enzyme हमारी body के अंदर जो भी chemical reactions होती हैं, जो भी biochemical reactions होती हैं, उनकी रेट को स्पीड अप कर देता है ताकि वो जो रिएक्शन है वो बहुत फास्ट हो सके बिकॉज इन everyday life we need to catalyze so many reactions in our body, in our own body, कि उसके लिए हमें enzymes की जरूरत पड़ती ही है. It is not restricted, like the use of enzymes, the functionality of enzymes is not restricted to only our body. It happens, like every reaction to that matter is catalyzed by the use of enzyme. Enzymes are very important, like very vital for all life processes. And how does it work? So it works by lowering activation energy. I will explain that later, what is activation energy. And but for now, just to understand like how does enzymes work, so they works by lowering activation energy. So see, enzymes जो होती हैं जब वो काम करती हैं when they function, हर एक प्रोसेस का एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी होती है जिसपे वो प्रोसीजर वर्क करता है, राइट. वो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है किसी भी प्रोसेस की, और दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी इज इनवर्सली proportion to the reaction getting finished. Enzymes function to lower the activation energy. They try to lower the activation energy, or that's how they facilitate the formation of the transition state in the uh, reaction. Okay, so the greater the value of the activation energy, the slower will be the reaction rate, or vice versa. अब ये एंजाइम्स कैसे ऑपरेट करती हैं, किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है, और किस तरीके से प्रोसेस जो है वो फास्ट होता है, दैट विल बी कवर्ड इन अ सेपरेट वीडियो. हर प्रोसेस की एक डिफरेंट एक्टिवेशन एनर्जी होती है, और एंजाइम्स जो होती हैं उन्हें लोअर करके, उन्हें रिड्यूस करके प्रोसेस को फास्ट करती हैं. ओके, how does enzymes lower this activation energy? They provide enzymes lower the activation energy by providing a site, the active site, where substrate molecules can bind and interact more readily. Substrate क्या होता है? Substrate जो होता है जिससे enzyme bind करती है, bind करने के बाद जो product बनता है, fast product बनता है, that is how the reaction works. तो enzymes जो होती है उन substrate के active site से bind करती है, and that's how they lower the activation energy and proceeds with the reaction. The reaction path turns in this way. Okay. So what is the general properties of enzyme? So see, an enzyme is a biocatalyst, as I have already explained, which increases the rate of chemical reaction without itself being changed in the overall process. Like enzyme does not get changed in the overall process. Enzymes जैसे initially होती है वैसे ही in the end of process रहती है. Enzymes does not change, and virtually all cellular reactions, जितने भी cellular reactions होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको सबको एंजाइम्स की जरूरत होती ही है. नाउ एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? दे आर मोस्टली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर. ओके, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. नाउ some enzymes, there are some exceptions जहाँ पे enzymes जो हैं catalytic RNA molecules हैं. Otherwise most of the enzymes are proteins, proteinaceous in nature. They are highly specific. What do you mean by highly specific? They are highly specific for the substrates. You cannot use any enzyme to bind with any substrate. There are particular enzymes which are specific for the particular substrate. They are highly specific in that way. Enzymes do exhibit enormous catalytic power. It increases the rate of reaction by lowering the activation energy. Enzymes do not change the equilibrium state. This is the most important property. Enzymes जो होती हैं वो equilibrium state एक process का change नहीं कर सकती, वो सिर्फ rate को fast कर सकती. ठीक है.
एंजाइम्स कैन डेफिनेटली बी रीयूज्ड, व्हाई? बिकॉज उनका जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहता है, बाय द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑल्सो, इनिशियली ऑल्सो वो चेंज नहीं होता है, सो दे कैन बी रीयूज्ड इन अदर प्रोसेसेस एंड दे वर्क अंडर माइल्ड कंडीशन। हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसी पे वो वर्क करता है। सो माइल्ड कंडीशन, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच एंड एवरीथिंग, ऑप्टिमम जो कंडीशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर द एंजाइम्स टू फंक्शन। Now, structure of enzymes. See, these are three parts of enzymes. Apoenzymes, not three parts actually, this is the three terminologies how we can relate to enzymes. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीनेशियस एंजाइम्स जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है। एक तो सिंपल एंजाइम होती है जो कि सिर्फ अमीनो एसिड से बनती है, यानी कि जो सिर्फ प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का उससे बनती है। कॉन्जुगेटेड एंजाइम होती है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम में एक प्रोटीन पार्ट यानी कि सिंपल एंजाइम प्लस देयर इज अ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो कि अटैच रहता है एंजाइम्स के साथ, तो उसे कॉन्जुगेटेड एंजाइम बोलते हैं। अभी नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? सो नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को हम कोफैक्टर बोलते हैं। इट्स अ नॉन प्रोटीन कंपोनेंट, इट इज आल्सो नोन एज अ कोफैक्टर। अभी अगर हम कोफैक्टर को रिमूव कर दें, सो रिमूवल ऑफ कोफैक्टर लीव्स अस with a simple enzyme which is made up of a protein or amino acids, so it is called as apoenzyme. जब हम कोफैक्टर को हटा देते हैं which is a non protein component एक एंजाइम में से, तो this becomes apoenzyme. apoenzyme actually biologically inactive रहती है। एक एपोएंजाइम तब फंक्शनल होती है जब उसे कोफैक्टर मिलता है, नॉन प्रोटीन हेल्पर मिलता है, तब एंजाइम जो है वो फंक्शन करना चालू करती है। नाउ एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर बिकम्स होलो एंजाइम, एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर बिकम्स होलो एंजाइम which is a functionally biologically active enzyme. ओके, अभी जो कोफैक्टर होता है वो एंजाइम्स के साथ लिंक कोवेलेंटली भी किया जा सकता है और नॉन कोवेलेंटली भी किया जा सकता है। कोफैक्टर्स जो होते हैं जनरली मेटल आयंस होते हैं, बट इफ नॉट मेटल आयंस दे कैन बी अदर ऑर्गेनिक लाइक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज वेल, लाइक विटामिन्स हो गए और उस तरीके से दूसरे कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो हम जो मेटल आयंस होते हैं उनके अलावा जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम कोएंजाइम्स बोलते हैं। ओके, इट्स द सेम टर्मिनोलॉजी फॉर अ सेम थिंग, कोफैक्टर। नाउ कोएंजाइम्स which are tightly associated with the protein covalently or non-covalently are called prosthetic group. जब कोएंजाइम्स जो होती है, जैसे विटामिन पार्ट मैंने आपको बोला, जब एंजाइम को हेल्प कर रहा है अगर वो एक विटामिन पार्ट, सो इफ दैट इज अटैच्ड टू द प्रोटीन कोवेलेंटली और नॉन कोवेलेंटली, उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज व्हिच आर important for you to understand, that's why I'm explaining it. How do enzymes work? Mechanism of enzyme action. First of all, the substrate binds to the active site. सबस्ट्रेट जो होता है वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है एंजाइम के। हर एंजाइम का एक एक्टिव साइट होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है। सो सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, एंजाइम का सबस्ट्रेट के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, उसे हम ES बोल सकते हैं फॉर नाउ। सो ES कॉम्प्लेक्स बना एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एंड देन दैट्स हाउ दैट एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कन्वर्ट्स इनटू द प्रोडक्ट। उसकी मदद से, उस कॉम्प्लेक्स की मदद से वो प्रोडक्ट फॉर्म होता है। Factors affecting enzyme activity. Now, as I said, enzymes, every enzyme has some optimum conditions to work. हर एंजाइम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काम करती है, पर्टिकुलर पीएच पे काम करती है, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं सबस्ट्रेट आपने ज्यादा या कम होना चाहिए, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर्टिकुलर होना चाहिए। एंड इनहिबिटर्स, and every enzyme has different set of inhibitors. Okay, so they are competitive and non-competitive inhibition होता है, अलग अलग तरीके के inhibitors होते हैं। Okay, so the most important thing for you to understand is the classification of enzyme. So जो इंटरनेशनल कमीशन है, इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन जो है, उन्होंने एंजाइम को क्लासिफाई करने के लिए प्रॉपर नॉमेनक्लेचर बनाया हुआ है जिससे हम एंजाइम को क्लासिफाई कर सकते हैं। एंजाइम बेसिकली कैन बी क्लासिफाइड इनटू 6 categories as, but
there are the nomenclature is very vast. You can definitely go on this website of International of Enzyme Commission. I'll put that link down below in the description box. And then that's how enzymes can be classified manner for everybody to understand. अभी ये जो enzyme का classification है, this is not for their like structure or something. This is for their reaction, how they catalyze the reaction, how they function in the process. Okay. So that is the classification of enzymes. So what are the types of enzyme? हम enzymes को 6 classes में divide कर सकते हैं based on their functionality. First is oxidoreductases. Second is transferases. Third is hydrolases. Fourth is lyases. Fifth is isomerases. And sixth is ligases. Okay. इस तरीके से आप 6 forms में classify कर सकते हैं. Now we will understand each type one by one. First, EC1, oxidoreductases. Oxidoreductases क्या होता है? It contains the enzyme catalyzing oxidation reaction. Oxidoreductases में वो सारे enzymes आते हैं जो oxidation reduction process को catalyze करती है. Oxidation reduction मतलब क्या है? Oxidoreductases is a mixture or a combination of oxidation plus reduction. Okay? यहाँ पे एक ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा और एक ग्रुप का रिडक्शन होगा. That's how the product will be formed. So see, the reaction goes like A reduction, A compound जो है उसका reduction हो रहा है, B का oxidation हो रहा है, and that's how we are getting the product A oxidation plus B reduction. Okay. Some examples of this type of enzymes are oxidases, dehydrogenases, oxygenases, peroxidases. These are some examples for oxidoreductases. Okay, there are so many other examples as well. Now transferases. As the name suggests, transferases मतलब transfer of group involved है. जब भी कोई भी एंजाइम रिएक्शन में ट्रांसफर होता है किसी भी ग्रुप का, द ग्रुप कैन बी एनी अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, फॉस्फोरिल ग्रुप, एक्रिल ग्रुप, एनी अदर ग्रुप, क्या होता है ए बी प्लस सी. इस रिएक्शन में ये जो बी कंपाउंड है इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू बी सी, गेटिंग ट्रांसफर्ड टू सी, फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स एज बी सी. ए अकेले रह गए एंड बी सी. That's how these enzymes work. Transferases, जो भी जहाँ पे भी ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है from one to another. ठीक है? So that is transferases. Example of these types of enzymes are transcarboxylases, transaminases, kinases. These are some of the examples. Okay? Next, hydrolases. Hydrolases, as the name suggests, it has something to do with the water, right? It catalyzes the reactions जहाँ पे water ऐड किया जाता है क्लीवेज करने के लिए बॉन्ड्स का. हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है. ए बी जो बॉन्ड है ए और बी के बीच में, उस बॉन्ड को हमें तोड़ना है. हाउ वी विल क्लीव इट? वी विल ऐड वाटर इन इट. वाटर ऐड करने की वजह से जो इसका हाइड्रोजन आयन है वो इसके साथ ए के साथ कंपाउंड बनाएगा AH, और जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो बी के साथ कंपाउंड बनाएगा, इट विल फॉर्म BOH. So water is added to accomplish the cleavage of the compounds. So that ऐसे रिएक्शन को जो कैटेलाइज करती है एंजाइम्स उससे हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं. Examples of this type is phosphodiesterases, phosphatases, peptidases, and so many. Next is EC4, enzyme classification 4, which is lyases. Lyases क्या करता है? ब्रेक करता है बॉन्ड को. कोई भी दो कंपाउंड के बीच में मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करता है, जैसे ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड यानी कि कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन सल्फर बॉन्ड, एनी अदर बॉन्ड. नाउ दिस बॉन्ड इज नॉट this bond are not cleaved by the process of hydrolysis or oxidation. They are cleaved by the process of elimination. जब एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है, if you are aware of this part of organic chemistry, जब भी एलिमिनेशन का प्रोसेस होता है तो वहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है. जब भी एलिमिनेशन बॉन्ड्स आर
whenever cleaved by the process of elimination, so वहाँ पे double bond का फॉर्मेशन हो जाता है या न्यू रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है. ओके, सो A double bond B plus HX, so it will form AX BH. Okay, this is how lysis work. Lysis breaks down the reaction by the process of elimination. It cleaves down the product, the substrate. Okay, these types of enzymes are example of this type is can be aldolases, synthetases, dehydratases, decarboxylases. Okay? Now isomerases. Isomerases में क्या होता है? Isomer मतलब एक same form of group जहाँ पे same formula but structure जो है उसका rearrangement है उस तरीके से उसे हम isomer कहते हैं. So it catalyzes several forms of intramolecular arrangements. Same molecules रहेंगे but उन्हीं का arrangement differ कर दिया. एक ही molecule का arrangement differ कर दिया और एक नया compound बन गया उससे. ऐसे reaction को जो catalyze करता है उसे isomerases बोलते हैं. A B था, B A बन गया. So see, इसका जो order है वो change हो गया. B पहले आ गया, A बाद में चला गया. इस तरीके के जो इंट्रामोलिकुलर अरेंजमेंट्स है जिससे आइसोमर बन रहा है. आइसोमर मतलब सेम फॉर्मूला रहेगा कंपाउंड का बट the structure will be different or the order of the molecule will be different. Okay, examples of this type is mutases, cis trans isomerases, epimerases and racemases. Okay, and others. Next and the last type is ligases. Ligases, I think most of you are aware of ligases. Ligases joins the bonds. जैसे लायसिस बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है ना, कार्बन कार्बन, कार्बन सल्फर, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, उसी तरीके से लाइगेसेस जो है वो कैटेलाइज कर रहा है रिएक्शन को विद द हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी. एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है इसमें बिकॉज लाइगेज करना है, जोड़ना है, तो उसमें लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए एटीपी इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस. ए प्लस बी प्लस एटीपी, इससे बन जाएगा ए बी. बॉन्ड जुड़ गया, ए प्लस बी जो था उसका बॉन्ड जुड़ गया, ए बी बन गया और एटीपी एनर्जी हमने यूज कर ली फॉस्फोराइल ग्रुप के मदद से. ठीक है, तो ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं लाइगेसेस. द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ एंजाइम इज कार्बोक्सिलेसेस. Okay? So these are the 6 types of enzymes. This is how you can classify any enzyme. If you want to understand the enzyme classification, do let me know below in the comment section. If you want to understand how can how is these enzymes classified, you can definitely go on the website International Enzyme Commission जो है वहाँ पे, and you can understand उनका पूरा they have a set of different rules and regulations of how you can classify the enzymes. Okay, I will put down the link in the description. Enzyme inhibition. See, this is a very vast topic, cannot it cannot be covered in one slide or so. It has to be a different video. So I will call this part in a different video, but for now just to understand what is enzyme inhibition. So enzyme inhibition क्या होता है, जैसे मैंने बताया हर एंजाइम के different inhibitors होते हैं. जब कोई भी एंजाइम काम करती है, कोई भी एंजाइम फंक्शन करती है, बाइंड करती है, तो हर एंजाइम का मैंने बोला हर एंजाइम का एक्टिव साइट होता है. वो एक्टिव साइट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करते हैं एंजाइम्स के साथ. अभी जब उस एक्टिव साइट पर कोई और इनहिबिटर आगे बाइंड हो जाता है, सपोज से फ्लोराइड आयन किसी एंजाइम के ए एंजाइम के एक्टिव साइट पे फ्लोराइड आयन आके बाइंड हो गया, बिकॉज अभी फ्लोराइड आयन बाइंड है तब तक वो सबस्ट्रेट उससे बाइंड नहीं कर सकता, तब तक ये फ्लोराइड आयन निकल ना जाए एक्टिव साइट से. राइट, जब तक ये फ्लोराइड आयन नहीं निकलेगा, जब तक सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा, रिएक्शन चालू नहीं होगी. So they inhibit the reaction in that process. Okay, so 3 types of enzyme inhibition are there: competitive, non-competitive and irreversible. Competitive inhibition की active site पे ही binded है वो inhibitor जो है वो joins elsewhere, कोई और site पे है but active site पे नहीं है, but still it will inhibit the reaction. How I explain? Irreversible, permanent inactivation. The enzymes cannot be now used because permanent वो irreversible inhibition हो जाता है. The enzymes cannot function now because irreversible permanent inactivation हो गया है. Okay, these are the 3 types, important types, and this is a very important topic as well. You need to understand enzyme inhibition.
to understand the proper functioning of enzymes and how do enzymes work. Okay, because this is a very important part. Every enzymes has inhibitors. Every enzymes, कोई भी रिएक्शन चालू ही तब होती है जब इनहिबिटर्स वहां से हटते हैं. Application of enzymes. See, enzymes are very important vital part of our functioning, the functioning of our body, and so many other processes throughout the world. जब हम रिसर्च वगैरह के लिए भी कोई प्रोसीजर करते हैं enzymes fastens the reaction by like very rapidly. It rapids up the reaction very much. So what are the applications of enzymes? It can be used, in industries like detergents, brewing, dairy. It is not restricted up to medical applications. The applications is vast. The industries में use होते हैं, medical में diagnostics, therapy, and so many applications are there. Research में DNA application. I have already like covered this topic. So DNA application और भी बहुत सारे processes में enzymes use होते हैं. Examples of common enzymes. These are some common enzymes I have listed down. Amylase enzymes जो होती है वो starch को sugar में convert करने का काम करती है. So amylase is very important enzyme. Lipase fat digestion. हमारी जो body है उसमें जो fat digestion करना होता है, हम जो भी खाते हैं उसको fat को digest करने के लिए lipase is a very important enzyme. Protease जो है protein breakdown करती है. Whenever we eat something, there is a whole process behind it, how the digestion works. It is not a simple 1 2 2 function step. It is a whole procedure, like list of procedures, not just one or two. So protein breakdown, protease, DNA polymerase, it synthesizes the DNA. Okay. Enzymes versus hormones. I'll just like listed down this just for your understanding. There is some people get confused between what are enzymes or what are hormones. Are they same, or if they are different, how they are different? See, they are totally different. They are totally different, but they are within our body. Enzymes are catalysts, work locally. Enzyme किसी भी reaction को fast करती है. Hormones on the other hand are messengers. So message को from one part of the body to the other part of the body लेके जाते हैं. Okay, so messengers होते हैं hormones, travel करते हैं through blood. Just a quick recap. Enzymes are biological catalysts. They are highly specific, highly efficient. They are affected by temperature and pH and substrate concentration, so many other things. So they require optimum condition to function, and they have wide industrial medical uses. Okay. So now I just want to understand if you have understood the video or not. So what is an enzyme? You need to comment down below in the comment section like what is an enzyme? What affects enzyme activity? And give one industrial use of enzyme. Please do comment down below with the answers of these questions for me. So what is an enzyme? Enzymes are biological catalysts that speeds up the rate of the reaction. What affects enzyme activity? Optimum conditions. pH, temperature, substrate concentration, these affect the or inhibitor, presence of inhibitor. These affects the enzyme activity. Here one industrial use of enzymes. They can be used in diagnostic purposes, pharmaceutical industries, medical industries, detergent industry, and so many other. So if you have commented down the same things, then you are right. If you are getting any doubts, if you are getting confused uh, with any particular slide or with any particular subtopic, please do let me know below in the comment section. Okay. Thanks for watching. Please do like, share, and subscribe to my channel for more science videos. If you want any particular topic of your choice for me to cover, please do let me know below in the comment section. I would be more than happy to cater you all guys. Thank you so much for tuning in. We will meet in the next video. Bye bye. Take care.